Good morning students. Now question number 3. Reduce the following equation into normal form and find their perpendicular distances from the origin and the angle between the perpendicular and the positive direction of x-axis. So this is the linear equation. So first we write this equation like this: r x cos omega plus r y sin omega equal to p. So we transpose a to the right side. So when we transpose, there is a negative sign. So here p is in positive form. This is perpendicular distance. So we make this minus 8 positive. So we multiply both sides by minus 1. So after multiplication we get minus x plus square root 3y equal to 8. Now we compare this equation by this: r x cos omega plus r y sin omega. So here this x, the coefficient of x is r cos omega. So here the coefficient of x is minus 1. So we write r cos omega equal to minus 1. Similarly here the coefficient of y is r sin omega. So here the coefficient of y is square root 3. So we write r sin omega equal to square root 3. After this we adding and squaring on both sides. So after adding and squaring both sides we get r स्क्र इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4. तो ये कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे जब इसका हम स्क्वेयर करेंगे तो आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा होगा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा. तो आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा वी नो दैट इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वेयर. ओके. और जो राइट साइड पे है, राइट साइड पे माइनस 1 का स्क्वेयर होगा 1 और स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर होगा 3. तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4. तो जब हम r फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2. नाउ अब हमने एंगल भी फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए अब आप r जो है वो आपके पास आ गया 2. तो यहाँ से अगर हम देखें r cos ओमेगा, सो r की वैल्यू हमारे पास आ गई इस तरह से लाइक दिस. r है हमारे पास 2. सो r cos ओमेगा इक्वल टू माइनस 1, r इज इक्वल टू 2. सो cos ओमेगा इक्वल टू माइनस 1. सो cos ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. सिमिलरली r, दिस r sin ओमेगा, r sin ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. सो r इज 2. सो sin ओमेगा is equal to square root and sin omega is equal to square root 3 upon 2. Now अब हमें एंगल जो है वो सेम फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि जो माइनस 1 अपॉन 2 है वो कॉज की किस एंगल पे वैल्यू है? माइनस 1 अपॉन 2. तो ये वैल्यू जो है वो कॉस 60 डिग्री पे होती है, माइनस कॉस 60 डिग्री. सो कॉस 60 डिग्री, so the value of cos minus 1 upon 2 is at 60 degree. So we write cos 60 degree as cos pi upon 3. Now to make it positive, we write cos omega as cos pi minus pi upon 3, because this is the second quadrant and in second quadrant cos is in negative. So after simplify we get cos 3 pi minus pi means 2 pi upon 3. So we get omega is equal to 2 pi upon 3. Similarly here sin, this value of sin is at which angle? So this is square root 3 upon 2. So this is at 60 degree. Again we write as sin pi upon 3. 60 degree means pi upon 3. And we can also write sin as pi minus pi upon 3. So this is in second quadrant and pi means there is no conversion. So again we get sin 2 pi upon 3. So here omega is same, 2 pi upon 3, 2 pi upon 3. So the angle is 2 pi upon 3.
Now we have to calculate the perpendicular distance. So r is 2, so here we write x cos omega means 2 pi upon 3 plus y sin omega 2 pi upon 3, and p is, so p after if we compare this by this equation, so here p is 8, so in place of p we write here 8, and r is 2, so we divide it by 2, so we get 4. So this is the normal form plus y sin 2 pi upon 3, and this is the perpendicular distance. So here p is 4 and angle is 2 pi upon 3, and this is the normal form. Similarly, do these questions second and third.